हेलो स्टूडेंट्स ए वर्ष नीट 2021 एग्जाम सरी जाइए तो किसी आम फिजिक्स प्रॉब्लम आज सॉल्व करिया हम प्रथम इजी क्वेश्चन सॉल्व करिया क्लास 12 रो इजी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उपरे बेस करछि सिंपल फार्मूला बहुत इजी फार्मूला। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन are effective in parallel combination. It is given by the formula that is this is 1 by R effective parallel. Clear? 1 by R effective parallel hele 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. R1 is equal to R2 is equal to R3 equal to R4. So this is 4 by R. R1 equal to R, R2, R3, R4 that is equal to R. So R effective in parallel that is equal to R by 4 and R by 4 is that is 0.25 ohm. So this is 0.25 ohm. So value of R that is equal to 4 into 0.25 ohm that is 1 ohm. तो प्रत्येक रेजिस्टेंस होची 1 ओम। बर्तन सीरीज कनेक्शन कले इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन इट हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट इज इक्वल टू 4R। सो 4R मीन्स 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। सो आंसर इज दैट इज 4 ओम। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन होची पोटेंशियोमीटर उपरे एवं एटा मतलब वेरी सिंपल फार्मूला दीटा ईएमएफ कंपेयर करा जाय सेटा होची E1 by E2 दैट इज इक्वल टू L1 by L2। पोटेंशियोमीटर माने एटा पोटेंशियोमीटर वायर AB इटा कनेक्ट करा जिवो सोर्स ऑफ ईएमएफ ये होची रेजिस्टर एवं ये की क्लोज कले करंट फ्लो हम एवं ये ईएमएफ कनेक्शन करा जाए जोड़ा कंपेयर करिए जो प्रथम ईएमएफ है ये E1 गाल्वानोमीटर नब ये गाल्वानोमीटर एवं ये जकी गोटे नि बैलेंस पॉइंट बाहर करियो मतलब ये बैलेंस पॉइंट है L1। क्लियर? नेक्स्ट E1 जगह पुट करिबा प्लेस करी रिप्लेस करिबा E2 हेले सिंपली बैलेंस लेंथ बाहर करियो L2। तो E1 by E2 equal to L1 by L2 गिवन होची E1 हला 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय E2 that is 2.5 वोल्ट and L1 is 36 तो हमें बाहर करियो L2। so this is 5 and 3 and this is 5 3 by 5 equal to 36 by L2। so L2 is equal to 5 by 3 into 36 so this is 3 this is 12 so 60 centimeter। so answer is 60 centimeter। next question a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is dash। very easy question parallel plate capacitor तेणु प्राय समस्ते ये पढ़ा parallel plate capacitor मान ये प्लस Q चार्ज एवं नेक्स्ट प्लेट इक्वल एरिया जोटा यार एरिया जी यार एरिया जी यार एरिया ए या भी एरिया ए हम चार्ज एटा होची माइनस Q एवं दीटा प्लेट मध्य सेपरेशन है D एवं वैक्यूम अच्छी स्पेसटा होची वैक्यूम कहीं इधर सब एप्सिलॉन 0 अच्छी तेणु यहाँ स्पेसटा वैक्यूम एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एवं आम जाने ये यूनिफॉर्म फील्ड हम ये यूनिफॉर्म फील्ड जार मैग्नीट्यूड होची E
एनर्जी डेंसिटी तब आम स्मॉल यू लिखे जोटा कि हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्राय समस्त जान एवं एनर्जी डेंसिटी हूँ एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम तेणु क्वेश्चन पचार एनर्जी स्टोर्ड तमें यहाँ हूँ कौन ये यू वॉल्यूम है कौन एडी स्पेस एरिया ए डिस्टेंस है डी तेणु स्पेस वॉल्यूम है एडी तेणु आम यू हम के यू है ये जो कैपिटल यू है एडी टी मल्टीप्लाई कर तमें यू इंटू एडी सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एडी वेरी सिंपल फॉर्मूला तेणु आंसर हम 3 नेक्स्ट हूँ डेफिनेशन बेस्ड पोलार मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन एवं यहाँ हूँ पोलार मॉलिक्यूल आम दी प्रकार मॉलिक्यूल जानते पोलार और नॉन पोलार पोलार वाला परमानेंट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तेणु आंसर 4 हम कहीं हेनी 0 डाइपोल मोमेंट हेनी एक्यूरेट डिस्प्लेसमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डिस्प्लेस चार्ज यहाँ हूँ नॉन पोलार केस यहाँ हूँ एक्यूरेट डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट यहाँ हेनी यहाँ हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोलार परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो आंसर हम 4 क्वेश्चन नंबर 5 the equivalent capacitance of the combination shown in the figure is dash तेणु ये कौटा हम तेणु ये जो कैपेसिटेंस ये सी ये है सी ये है सी तेणु ये जो सी ये जो आक्रॉस अपर और लोअर पार्ट जो कनेक्शन है तेणु इधर ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्शन है नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया मैंने शॉर्ट हो गला ये कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया शॉर्ट कैपेसिटर तेणु कैलकुलेशन यहाँ हम यहाँ शॉर्ट हो गला तेणु यार कैपेसिटेंस टोटल इट इज 0 हो तेणु बर्तमान ए सी आउ सी ये दुईटा है बर्तमान पैरेलल कॉम्बिनेशन एवं पैरेलल कॉम्बिनेशन रे कैपेसिटेंस ऐड करा जाए सी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2c तेणु आंसर हूँ 2c वेरी इजी क्वेश्चन एवं नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ टिके यहाँ करिया पड़ो प्रॉब्लम रे 2 चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स मनकर ये स्पेरिकल कंडक्टर ये रेडियस है R1 आउट स्पेरिकल कंडक्टर नब या रेडियस हूँ R2 तो यहाँ कनेक्ट कर दिखाई आर कनेक्टेड बाय वायर देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज डैश कोटा हम तेणु मानकर जिते यहाँ चार्ज थी यार सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 यार सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 जिते कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल इक्वाल हम पोटेंशियल माने ये भी हम ये भी हम तेणु सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 माने सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा चार्ज क्यू डिवाइड बाय एरिया तेणु क्यू इक्वल टू हम सिग्मा ए हम एवं पोटेंशियल V इक्वल टू K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट K Q by R R इज द रेडियस ओके तेणु पोटेंशियल सेम मीन दुईटा हम तो ये पुट करें आम Q जगह सिग्मा ए K सिग्मा ए by R एंड ए हूँ एरिया 4 पाई R स्क्वायर K सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर by R so this is equal to K sigma 4 pi R now this B1 is equal to B2 so we write K sigma 1 4 pi R1 that is equal to K sigma 2 for the second sphere K sigma 2 4 pi R2 so K cancel हो 4 pi cancel हो so sigma 1 R1 is equal to sigma 2 R2 और sigma 1 by sigma 2 that is equal to R2 by R1 so answer is second that is R2 by R1 next question an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere
as shown in figure. So PQ is an infinitely long straight conductor. It carries current 5 ampere, and an electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The particular distance between the electron and the conductor is 20 cm. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. A diagram रे PQ वाला straight wire, एटा infinitely long straight conductor, एथिरे current 5 ampere flow होची, एवं ई straight wire रो गोटे इलेक्ट्रॉन टा 20 cm distance रे अछि, एवं इलेक्ट्रॉन टा मूव करूची तार velocity वाला 10 to the power 5 meter per second, एवं एटे parallel to the current, parallel to the straight wire. तो या उपरे फोर्स केते पड़िबो, तो प्रथमे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करबो पड़िबो. मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, एवं मैग्नेटिक फील्ड जे परपेंडिकुलर होइछि, परपेंडिकुलर, तनो प्रथमे बी टा बाहर करबो पड़िबो. स्ट्रेट कंडक्टर त मैग्नेटिक फील्ड वाला बी, दैट इज μ0 I by 2 pi d. तो एटु जे मैग्नेटिक फील्ड एटि रहइबो, तो एटा बर्तन कैलकुलेट करबो पड़िबो. μ0 by 4 pi टेला 10 to the power minus 7, एटा μ0 by 2 pi हेले 2 into 10 to the power minus 7. I using 5 ampere, तो एटा into 5 divided by d हेला 20 cm, ताको मीटर करबो पड़िबो. So 20 into 10 to the power minus 2 meter. So 5 into 10 हेला 2 होबो. So this is 10 to the power minus 7 plus 2 divided by 2. So this is 10 to the power minus 5 by 2. So this is 10 by 2 into 10 to the power minus 6. That is equal to 5 into 10 to the power minus 6 Tesla. Tesla magnetic field unit. But the force of F equal to Q means here electron, E V B, Q V B. The sin theta 90 degree, kind of magnetic field yes the magnetic field perpendicular. So sin 90 degree 1, so E V B. E is electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Velocity is 10 to the power 5 meter per second, and B is 5 into 10 to the power minus 6. So this is equal to 1.6 into 5, that is 8.08 into 10 to the power, this is minus 19 minus 6 minus 25, this is plus 5 minus 20 Newton. So answer is, that is 4 is the right answer. Next question, 3 resistors having resistance R1, R2, R3 are connected on a Sony figure. It is a connection. The ratio I3 by I1 of currents internal resistance used in the circuit is dash. एक केस रे आमे R2 और R3 ए दुईटा रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन हिची, तेणु पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. दैट मीन्स I2 R2 इक्वल टू I3 R3, एवं एटा जो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. I1 is equal to I2 plus I3. इटला जंक्शन रूल. तेणु आमको बाहर कर पड़ो I3 by I1. तेणु ये जो I2 प्लेस रे हमें पुट करबा कोन I1 minus I3. I2 equal to I1 minus I3. तेणु ये प्लेस करिवे I1 minus I3 into R2 is equal to I3 into R3. हमर दरकार होची I3 by I1. तेणु ये I3 रे डिवाइड कर, डिवाइड कला कोन होबो ना I1 by I3 minus I3 by I3, that is 1 into R2, or we say this is R3 by R2, or I1 by I3 that is equal to 1 plus R3 by R2. So this is R2 plus R3 by R2. तो बर्तन ताकू रिवर्स करो, उल्टी दियो. I1 by I3 टा I3 by I1 that is equal to R2 by R2 plus R3. तो आंसर होची this is R2 by R2 plus R3. Answer is 2. Next problem, that is 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop.
calculate the potential of the bigger drop. तो ये जो क्वेश्चन है ये कैपेसिटेंस चैप्टर रु आछि तेणु सॉल्यूशन होछि स्मॉल ड्रॉप्स रेडियस मन कर r एगुड़ा मिसला परे गोटे बिग ड्रॉप हम एवं बिग ड्रॉप रो रेडियस होछि कैपिटल R तेणु वॉल्यूम टा सेम है एटा 27 ड्रॉप्स एटा 1 बिग ड्रॉप तेणु वॉल्यूम एका हो यार वॉल्यूम है 4 पाई बाई 3 आर क्यू गोटे ड्रॉप रो वॉल्यूम 27 टा ड्रॉप अच्छे तो ये 27 ड्रॉप रो वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप ये सो दिस इम्प्लाइज r cube is equal to 27 r cube. This is 3r to the power cube. So r is equal to 3r. बर्तमान मानकर स्मॉलर ड्रॉप रो पोटेंशियल होची स्मॉल v, बिगर ड्रॉप रो पोटेंशियल है कैपिटल V. एवं प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप रो कैपेसिटेंस है मानकर C0 एवं बिगर ड्रॉप रो कैपेसिटेंस है C. सो C0 कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप रो चार्ज Q बाय पोटेंशियल इज स्मॉल v. सेम द बिगर ड्रॉप रो कैपेसिटेंस C इक्वल टू दैट इज कैपिटल Q बाय कैपिटल V. So taking the ratio that is C by C0 that is Q by V by Q by small v. So this is Q by V, this is small v by Q. Now this capital Q that is 27 small q, capital Q that is 27 small q. So 27 small q by q into small v by capital V. So this is 27 small v by capital V. So capital V by small v that is equal to 27 C0 by C. So this is 27 C0 capacitance, 27 C0 capacitance that is R by K, and this C is that is capital R by K. So this is 27 R by R. So this is equal to 27 and R is equal to 3R. So R by R that is equal to 1 by 3. So this is 1 by 3 that is 9. So V is equal to 9 small v. So 9 into small v that is your 220 volt. 220 volt. So that is equal to 1980 volt. 1980 volt. So this is the correct answer. Next problem that is based on LCR series. So this is the inductor, its inductance is L, capacitor C and resistor R. It is connected to a source of alternating EMF, that is its potential is V. Potential difference V volt. Potential difference across L is 40 volt. Potential difference across L is 40 volt. Across C is 10 volt. 10 volt. And across R is that is 40 volt. The amplitude of the current flowing through the LCR series is 10 root 2 ampere. This current is that is 10 root 2 ampere. Then what is the impedance of the circuit? We know that current, maximum current
Im, that is equal to Vm by Z. Z is the impedance. Z is called impedance. And Vm square, maximum potential difference Vm square, that is equal to Vm R square, potential difference across resistor, plus that is mod of Vml minus Vmc square. So this is the relation. So Vmr, this is your 40 square, plus Vml, that is 40 volt minus Vmc, that is 10 volt, 10 square. So 1600, and this is your 30 square, that is 900, so 2500. So Vm, that is equal to 50, and current I is, that is 10 root 2 ampere. So Im equal to I by root 2. So this is 10 root 2 by root 2, that is 10. So Z equal to Vm by Im. So Vm is 50, so this is your 50 volt. So 50 by Im is 10, so that is 5 ohm. So answer is this 5 ohm.